Um, am I audible clearly? Please respond me in the chat box, Sarah and Monem. All right, thank you. Now, today we are going to start a concept that is called, it's a very small concept though, entropy change. ठीक है. अच्छा, entropy change is denoted by delta S, and it is actually a thermodynamic function that is something related to energy and rest, particularly talking about heat energy. So if I find the formal wording for definition, the entropy denoted by S of a given system is a number of possible arrangement of the particles all right. हाँ ठीक है मैंने particles and their energy in a given system. ठीक है बेटा. अब इस डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली, जैसे सबसे पहले मेरे पास पहला फ्रेज है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स. अच्छा, पहले तो एक बात याद रखें, less the particles, less the number of arrangement, ठीक है. तो जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जाएंगे मोड्स ऑफ अरेंजमेंट भी बढ़ते चले जाएंगे. ये तो एक अलग बहस है. लेकिन अगर इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर देखने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं इट कैन बी a measure of disorderness of a system. अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट एसोसिएट कर देते हैं. more disordered the system, more stable the system. जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. अब इसको इस तरह से भी कर सकता हूं कि an increase in entropy means that the system is thermodynamically stable, more stable. ठीक है जनाब. तो ये पहला एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि बेसिक इंट्रोडक्शन एक जगह पे आ जाए आपके पास. There it is.
I hope the things are visible to you people. चलिए, अब अगर इस डेफिनेशन को मैं अप्लाई करता हूँ, थैंक यू मनन, अप्लाई करता हूँ regarding any reaction, calcium carbonate, which is solid. If I heat this, it turns into calcium oxide and carbon dioxide. Okay, this is solid and this is gas. In this decomposition, you find a gas is being produced. ठीक है, अगर गैस प्रोड्यूस होगी, so this is responsible for disorderness. ये गैस रिस्पॉन्सिबल होगी डिसऑर्डरनेस के लिए. अच्छा जी, दैट मीन्स अगर कोई सॉलिड है तो इसकी लेस एंट्रोपी है. अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी मोर एंट्रोपी है. तो इस रिएक्शन में आई कैन से entropy is increasing as a gas is being formed, and gas has more randomness or disorderness, and if it has more disorderness, that means there are more number of possible arrangement in case of carbon dioxide. ठीक है बेटा. अच्छा, इसको भी अपने पहले स्क्रीनशॉट के अंदर आप लिख लीजिए. Once you take screenshot, write yes in the chat box so that I can move on. दूसरी एग्जांपल में, थैंक यू, सब लोग रिस्पॉन्ड किया करें क्विकली. अब दूसरी सी सिंपल सी एग्जांपल में, if I talk about water, which is liquid, which is solid rather, यानी ये आइस है. If it melts to form H2O liquid, तो मैं ये कह सकता हूँ there water has fixed arrangement, and if it has fixed arrangement, that means there are specific or less modes of arrangement, and once it turns into liquid, the particles are free, so it has more modes of arrangement. And suppose if I turn this into gas, the particles are even more freer. Like according to ideal gas, once something turns into gas, it must have least attractive forces, and if it has least attractive forces, like ideal gas तो कहती है कि force of attraction होनी नहीं चाहिए, but I know it's water, so it must have hydrogen bonding even if it is in a gaseous state. लेकिन फिर भी liquid state से ज़्यादा, like there are more number of possible arrangement. So I can say that during this phase, entropy is increasing.
Even in this phase, entropy is increasing. So if I'm going from dense state to the rare state, entropy increases. What if I go backward? I can write entropy decreases, obviously. Entropy decreases, right? ये तो मैंने थोड़े फेजल चेंज वाटर के देखे और उसमें एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज होती हुई देखे, राइट? सो अब यहाँ पर आइडिया किस चीज का है? इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इन लिक्विड दे आर इन ग्रुप्स, and in gas they are far away from each other. So जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वालेकुम अस्सलाम साहब, तो इनकी एंट्रोपी भी बढ़ती जा रही है, अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म हमें डिवाइस कर रहे हैं, all the substances, the like rather elements have positive molar entropies. Everyone, like each element has positive molar entropy value. And one more thing that we have already devised, gases have more entropy than liquids have more entropy than gases, or solids. तो ये मेरे पास एक और अरेंजमेंट आ गया। Now, molecular complexity, molecular rather structural कह लूं तो ज्यादा बेहतर है, structural complexity is also explaining entropy. ये दो बातें तो हमने, जैसे फर्स्ट कीजिए, lithium has less entropy than sodium, has less entropy than potassium. तो मैं यहाँ देख रख सकता हूँ कि AR value increasing, entropy increasing, ठीक है? और कोई एस्पेक्ट, for example, if I'm comparing element with a compound, sodium entropy is less than sodium hydroxide, less than sodium carbonate. So you can look at the structural complexity. जैसे जैसे ये पोटेशियम है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, एंट्रोपी वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, ठीक है? तो जरा इसको जूम आउट करते हैं ताकि बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया दिस कंपोनेंट। तो यहाँ इन दो पॉइंट से मैंने क्या जाना, simpler substances that has
fewer atoms have lower entropy values compared to complex substances. AR and MR values are also affecting entropies. तो यहाँ पे भी एक टर्म बना लेते हैं, more the AR, MR, more the entropy. ये मेरी सेकंड स्लाइड तैयार हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको एक अंदाज से और एग्जामिनर ने एक दफा टेस्ट किया था। प्लीज राइट यस वंस यू गेट डन। I want everyone to write yes if you take the screenshot of it. Okay. तो ग्रेजुअली हम कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा जूम इन करता हूँ। Now, harder substances have low entropy value compared to softer substances. अब यहाँ मैं एक आइडिया दोबारा से दे सकता हूँ। सोडियम इज हार्डर देन पोटेशियम। यहाँ पे डिफरेंस AR का भी आ रहा है और हार्डनेस का भी आ रहा है। सोडियम का AR लो है एंड सोडियम इज हार्डर देन। सर हमें कैसे पता चले हार्डर? डाउन द ग्रुप मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 गेट सॉफ्टर एज वीक डाउन द ग्रुप metals of group 1 get softer. ये सॉफ्ट होते जा रहे हैं। रीजन वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ से यहाँ AR भी बढ़ रहा है, सॉफ्ट हार्डनेस भी कम हो रही है। तो दोनों सूरतों में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल बेसिक आइडिया सारे कवर करते हुए अगर मैं यहाँ पर लेट मी गो फॉर अ लिटिल एक मिनट यहाँ पर वाटर की 3 फेजेस को लेते हुए एंट्रोपी को ग्राफिकली in solid state water has low entropy value. As the state changes, the entropy jumps and jump further. This is the entropy of solid, liquid and gaseous water. तो ये इसको मैंने यही लिख दिया ताकि इस एग्जांपल के साथ तुम आसानी से कनेक्ट कर सको। इस एक्सेस पे टेम्परेचर ले लीजिए, इधर एंट्रोपी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और एस्पेक्ट मैं चाहता हूँ, ये पहले ये वाली बात अभी हमने की है। For example, NaCl solid has less entropy
compared to NaCl aqueous. More entropy. जैसे 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 particles are getting free, they are getting more and more method of arrangements. So they are increasing their entropy. So अब reactions में ये reaction की तो एक जनरल बात मैंने कर ली थी कैल्शियम कार्बोनेट की. Is that basic ground of entropy making some sense to you? Please write in the chat box. I just got 2 responses. If I generalize this idea, I must say in melting, entropy increases. If entropy is increasing, I would be mentioning this with a positive sign. Boiling, obviously, entropy increases. Dissolving, entropy increases. Increase in gaseous moles, during reaction, entropy increases. Freezing, entropy decreases. Negative sign. Condensation or condensing, entropy decreases. Crystallization, entropy decreases. And decrease in gaseous particles, entropy decreases. So there are 4 aspects in which we have seen increase and decrease of entropy in order to judge entropy directly. ठीक है बेटा. तो ये मेरे पास पहला बेसिक एस्पेक्ट एंट्रोपी का. Just looking at, for example, what do you think? N2 plus 3H2 producing 2NH3. बताओ, एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस. चलो भाई सब लोग बताओ इंडिविजुअली whether the entropy is increasing or decreasing. Whether the entropy increasing or decreasing in this case. Yes, why not? Because there were 4 moles of gas and they're turning into 2 moles of gases. The entropy is decreasing. So the entropy value will be negative in this case. All right? Does that make sense? Samana, Zainab, Manur, and Rubesha, Sarah, and Abdul Munib. Okay.
Now moving further, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए ताकि फिर हम यहाँ से बात को थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क एग्जांपल्स की तरफ लेके जाएं. All right. I'll be sharing this video on the group. All right. Okay. Now, like in order to calculate entropy change, the standard entropy change that is delta S system. Entropy can be of two types. It's of system and of surrounding. Surrounding is not useful to us because हमें directly Gibbs free energy बता दी जाती है, वो हमें directly apply करनी पड़ती है. मेरा the standard enthalpy change, that means delta S system, for a given reaction can be calculated using standard enthalpies of reactants, entropies of reactant and products. अगर मुझे रिएक्टर और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज पता चल जाए तो मुझे सिस्टम एंट्रोपी निकालने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू sum of delta S of products. Yeah, you can have more than one product. So you have summation of all entropies of product minus sum of delta S reactants. तो इस फॉर्मूला से मैं बआसानी एंट्रोपीज को कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है भाई, अब फर्ज कीजिए अगर मुझे इसी रिएक्शन की जो भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया, नाइट्रोजन 3H2 2NH3, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी और एंट्रोपी enthalpy will be sum of products. 2 moles of delta S standard for NH3 minus delta S standard for N2 plus 3 times delta S standard of hydrogen. If I just plug in the values, I'll get my answer. What is the entropy change of system? चलिए एक वर्क एग्जांपल देखते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैंने यहाँ write yes in the chat box.
मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल एक सिंपल से सेपरेट जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करने और प्लग इन करने में। फर्स्ट कीजिए अगर मैं क्वेश्चन फ्रेज करने की कोशिश करूं, कैलकुलेट द एंट्रोपी change of the system for the following reaction. Reaction. And the reaction is 2 mg solid plus O2 gas. अब वैसे प्रेडिक्ट करो क्या आंसर आना चाहिए, बताओ सारा, तुम बताओ. What can be the value for the entropy change of system in this case? Positive or negative? समाना तुम बताओ, मानूर तुम बताओ. शाबाश अब्दुल. You're absolutely right. Why is that? Can you give a reason? Shabash, Sarah. Shabash, Sarah. And Samana. The entropy will be negative. Why? Because as there are less number of gases product, or gases are being removed from the system, right? So अगर मैं इनकी वैल्यू प्लग इन करता हूँ, डेल्टा एस सॉरी एस स्टैंडर्ड एम जी सॉलिड is 32.60 जूल पर केल्विन इनवर्स per mole, ये इसका यूनिट है. अच्छा, S standard for O2 gas is 205.0 joule Kelvin inverse mole inverse, and standard MgO solid is 38.20 joule. तो जरा वैल्यू प्लग इन करके आंसर मुझे सेंड करो जल्दी से, जल्दी से. And the answer is minus 193.8. Shabash. Minus 193.8 joule कन्वर्स मोल्स. शाबाश बेटा. तो इस तरह से हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है. शाबाश जनाब. ऑलराइट, मैं दूसरा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ. दिस इज अबाउट टू गेट एक्सपायर. सी यू इन 2 minutes.
देखी थी मेरी